हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अपने पोर्टफोलियो का। हम हर वीक अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं और उस अपडेट्स को इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं। इसी सीक्वेंस में आइए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट्स की तरफ चलते हैं। देखते हैं 1 और 2 मिनट ओवरव्यू ऑफ मार्केट। धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी आ रही है और उम्मीद है कि इस रिकवरी के बीच हम सब के पोर्टफोलियो धीरे धीरे रिकवर कर रहे होंगे। आइए एक नज़र डालते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले एक वीक की प्राइस मूवमेंट्स किस तरह की रही और आगे मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम पिछले वीक तक के निफ्टी के चार्ट को देखें तो पिछला हफ्ता हमारा ट्रंकेटेड वीक था, यानी कि 4 दिन वर्किंग थे। तो इसमें अगर हम इस 4 दिन को छोड़ दें तो दिस वाज द लास्ट फ्राइडेज कैंडल। और अगर हम क्लोज की बात करें तो 23,500 के आसपास हमारा क्लोज था। और उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो ये पीछे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ था, उसके हिसाब से निफ्टी के इवेंचुअल लेवल्स 23,200 से 23,300 के बीच आने चाहिए। और मैंने जोर देकर ये कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 23,200 से 300 के बीच के लेवल्स हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। और हम बड़ी आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी ने 23,260 के आसपास का लो बनाया हुआ है। ये थर्सडे का लो है, एक्सपायरी के दिन, उस दिन का ये लो था। और वेरी फॉर्चुनेटली फ्राइडे को मार्केट ने एक बड़ी रैली दी है, खासकर मेजर इंडेक्स यानी कि निफ्टी ने लगभग 2.5% के रिटर्न एक ही दिन में दिए हैं। बाकी दूसरे इंडाइसेस यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है और 1 से 1.5% तक के रिटर्न उन्होंने भी दिए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो शार्प बाउंस बैक आया है, यानी कि ये जो लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, ये मोस्टली 2 रीजन से बनी है। पहला तो ये कि यहाँ पे 200 डीएमए पे मार्केट को सपोर्ट लेना ऑब्वियस था और यहाँ से सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड। पहला तो रीजन वही था। दूसरा रीजन हमारा महाराष्ट्र के इलेक्शंस, जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो सरकार है वही सरकार कंटिन्यू करेगी, ऐसी उम्मीद है। और इनफैक्ट अब तो हम देख भी रहे हैं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द संडे, सैटरडे को रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और उसके हिसाब से भारी बहुमत से बीजेपी प्लस की जीत हुई है। और उस बेसिस पे ये मार्केट में बड़ी रैली आई थी। अब सवाल ये है कि क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर से हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चूँकि ये हफ्ते की कैंडल है, उसके उस टाइम पे रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं थे। इट वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि बीजेपी कुड कम, बट अभी ये डिक्लेयर हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली ऑन द मंडे वी शुड सी सम रैली एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। आफ्टर दैट वी हैव टू सी, वी हैव टू वॉच द मार्केट्स एंड देन वी हैव टू एसेस कि क्या होने वाला है। बट अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ें तो वी कुड वेरी क्लियरली वी वुड फॉर श्योर गेट सम रेसिस्टेंस एट लेवल्स ऑफ 24,000, and then even if we are able to surpass it, there are multiple resistances actually. Other resistances sitting at the levels of 24,200. Then there is this eventual resistance at the levels of 24,460 somewhere, where this line that represented this breakdown of head and shoulder, right? So that line will act as a major resistance. यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 24,000, 24,200 एंड 24,450 कुड बी मेजर रेसिस्टेंसेस। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो एज आई सेड इन द प्रीवियस एपिसोड कि मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखती नहीं है मार्केट में। इट शुड कंसोलिडेट समवेयर बिटवीन द लेवल्स ऑफ 23,000 एंड 24,000। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट 23,000 से नीचे भी नहीं जाएगा। देखते हैं मंडे को और बाकी थ्रू आउट द वीक किस तरह के एक्शन बनते हैं मार्केट में। ये था पहला पार्ट। आइए चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को डिस्कस करने के लिए हम इस चार्ट्स को यूज करेंगे। यहाँ पे तीन लाइन्स हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन हमारी पोर्टफोलियो की लाइन है, बाकी जो रेड लाइन है वो निफ्टी की लाइन है, और जो ऑरेंज और येलोइश लाइन है दैट इज़ निफ्टी मिड कैप लाइन। वी कुड वेरी क्लियरली सी कि हमारा पोर्टफोलियो, आई मीन वी मेड दिस पोर्टफोलियो
3 अक्टूबर 2024, और तब से लेकर अब तक 7 वीक हो गए हैं। हम हर वीक की प्रोग्रेस भी वीडियो के माध्यम से अपडेट करते हैं, और आज 7 वीक के बाद हम देख सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो की नेट रिटर्न -0.45%। अगर हम इसको नॉर्मलाइज करें तो 0% रिटर्न बनती है, और एट द सेम मोमेंट निफ्टी की रिटर्न हम देख सकते हैं -5%, और निफ्टी मिड कैप की रिटर्न -6%। सो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि हम गिरते हुए मार्केट में या बढ़ते हुए मार्केट में, सारे मार्केट्स में हम निफ्टी और बाकी दूसरे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। चलिए एक नज़र डालते हैं अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पर, और देखते हैं कि उन्होंने वीकली बेसिस पर किस तरह के रिटर्न दिए हैं। मैंने इस लिस्ट को वीकली रिटर्न्स की बेसिस पर सॉर्ट कर लिया है। हम देख सकते हैं स्काई गोल्ड ने हमें सबसे ज़्यादा वीकली रिटर्न दिया है 21%। सिल्चर टेक्नोलॉजीज़, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ऊनो मिंडा, वरुण बेवरेजेस, इन्होंने 7 से लेके 10% तक के रिटर्न दिए हैं। आगे हम देखें तो केन्स टेक्नोलॉजीज, CDSL, त्रिवेणी टर्बाइन, अपार इंडस्ट्रीज़, होम फर्स्ट, and then Ramkrishna Forging, RK Forging. So these stocks have given 3 to 5% of return. बाकी अगर हम और आगे चलें तो आनंद राठी, चॉइस इंटरनेशनल, श्रीराम फाइनेंस, Caplin Point Laboratories, these stocks have given very moderate returns on the positive side. और Angel One, Zen Technologies, Gravita India, Balu Forge, Action Construction, Tinna Rubber, KPI Green, Jupiter Wagon, Vesuvious India, Venus Pipes and Tubes. So these stocks have given moderate returns on the negative side, I mean -2% kind of. And then there are sorry, and then there are stocks that have given big losses in the last week, and they are Rategain Travel Technologies, KPIT, Epigral, ITD Cementation, and Bikaji Foods. So these are the stocks that are given kind of -5 to -6% of return in the last week. अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग की तरफ, और डिस्कस करते हैं कुछ पोर्टफोलियो चेंजेस के बारे में। सो जैसा कि मैंने मेंशन किया, पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं। सो उन चेंजेस को डिस्कस करने के लिए हम इस शीट को बेसिस बनाएंगे। इस शीट को हम पिछली वीडियोस में कई बार रेफ़र भी कर चुके हैं। इस शीट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शीट में ना सिर्फ वो 30 स्टॉक्स की लिस्ट है, बल्कि उन 30 स्टॉक्स के फंडामेंटल पैरामीटर्स यानी उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, वो किस सेक्टर या किस बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, इस तरह की सारी डिटेल्स, और साथ में Q1 और Q2 में उनके कंपनीज़ के रिजल्ट कैसे रहे, उन सब को इस शीट में कैप्चर किया हुआ है। आप इस शीट को डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके देख सकते हैं। हमने पिछले वीक या 2 वीक पहले इस पोर्टफोलियो में 2 चेंजेस भी किए थे। हमने कल्याण ज्वेलर्स को और CG पावर को इस पोर्टफोलियो में से बाहर किया था, और उनके बदले हमने 2 स्टॉक्स को एंट्री कराई थी। वो थे बालू फोर्ज और होम फर्स्ट फाइनेंस। सो वेरी रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू द पोर्टफोलियो, और उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि इस पोर्टफोलियो में अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिनका रिजल्ट शायद उतना अच्छा नहीं रहा जितना उनसे एक्सपेक्टेड था, या फिर जिनकी कमेंट्री आई मीन जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उस टाइम पे कंपनीज़ के कॉल होते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं, और उसमें मैनेजमेंट बात करता है अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, करंट रिजल्ट्स प्लस फ्यूचर रिजल्ट्स के क्या एक्सपेक्टेशन है उन सबको वो डिस्कस करते हैं। और उन कॉल्स को मैंने फॉलो किया, और रिजल्ट्स को फिर से मैंने रीवैलिडेट किया। सो अपने इस एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि देर आर 3 more stocks that probably should be moved out from the portfolio, and 3 more prominent stocks or 3 more promising stocks should be moved in. So what 3 stocks we are thinking of moving out are these 3 stocks. I mean Jupiter Wagon, very commonly known as JWL, and then there is this Vesuvious India, and then there is ITD Cementation. So let's discuss why do I want to move these 3 stocks. So अगर हम जुपिटर वैगन की बात करें तो जुपिटर वैगन के रिजल्ट्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर डिटीरियोरेट होते रहे हैं। पिछले वीक में इनके
इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ क्लोज टू 15-20% के आसपास थे। बट अगर हम उससे पीछे के क्वार्टर में जाएँ तो उनकी ग्रोथ 25% के आसपास थी। उसके पीछे जाएँ तो इट वाज लाइक 35-40%, उसके पीछे जाएँ तो इट वाज लाइक 60-70%। सो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उनके रिजल्ट्स डिटेरियोरेट होते रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई paid attention to the con calls. The management was somehow not very confident, and they accepted that maybe in the remaining quarters of the current financial year there will be this slowdown continuing. So on basis of that, I reached to a conclusion that we should move out Jupiter wagons. The next item is Vesuvious India. This is also having similar feedback. I mean, I was going through results, और इस बार कंपनी के रिजल्ट्स में हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10% के आसपास की दिखी है। बट हिस्टोरिकली आई वाज चेकिंग थ्रू द प्रीवियस रिजल्ट्स एंड देन आई फाउंड कि पिछले 7-8 क्वार्टर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब उनके रिजल्ट्स इस तरह के कमज़ोर आए हों। और आई मीन कन्वेंशनली दे गिव लाइक 25%, 20% revenue and profit growth, and this time suddenly 10%. Though there is a generic slowdown, everything is, I mean, every other company is suffering, but nevertheless there are companies that are doing well. So why should not I jump from this company to another company which is having better prospects? And on top of that, in case of Vesuvius, there was a huge run. If you see the charts of Vesuvius India, maybe I can go to Vesuvius India and let's look at the chart. Yeah, so if you look at the Vesuvius India, so let's take a look on the charts of Vesuvius India and see what happened in the stock. So जुलाई 2022 में the stock was trading near the price of 1000, and then suddenly here if you see 22 May 2024, I mean 2 years down the line the price was suddenly 5000. So this is nothing but five-fold price increase within the duration of 2 years. And the point is that at this point of time company was delivering very good results. I mean 25%, 30% revenue and profit growth YOY. सो ये जो पीछे का रन हो चुका है, ये रन तभी जस्टिफाइड है और ये प्राइसेस तभी जस्टिफाइड है जबकि कंपनी के रिजल्ट्स उसी तरह से अच्छे आते रहे, यानी कि 25%, 20% की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू रहा है। बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस बार वैसा नहीं रहा, लगभग 10% का ग्रोथ दिखाया कंपनी ने, बट दैट particular thing is not justified, and based on that and price to earning to growth, on those parameters the stock is looking more costly, and I somehow believe that this particular stock will start downward journey from here. So it's better to jump from here to another company. So that's the reason why I decided to move out this particular stock, Vesuvius India. And then let's go to the next company, ITD Cementation. So this particular company is part of Adani Group now. I mean, within the last quarter only this particular kind of arrangement happened. So earlier this was an independent company, but Adani Group kind of took it over. एंड जैसा कि ये लास्ट वीक में देखने को आया है, अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं यूएस की तरफ से, एंड अर्लियर आल्सो वी सॉ दैट हिंडनबर्ग रिपोर्ट एंड ऑल. So somehow from Adani Group stocks I'm not very convinced, and that's why you will not find any of the Adani Group stocks in my portfolio. So somehow I want to have a peace and I don't want to have any sort of uncertainty, and just to avoid that, so I would move out of this ITD cementation as well. So these are the three stocks and reasons behind why I'm moving out of them. And then let's discuss about the three stocks that we are kind of pushing into the portfolio. So Kaynes Technologies, this is a financial services company. I mean, you could see the details of sector and business etc here. So Kaynes Technologies is a financial services company. They kind of run in the background. I mean, when we trade into the stocks or when we take the IPOs etc, that time we deal with certain brokers like say
Zerodha and say some XYZ banker to facilitate these transactions. But this Kaynes technology is something that sits behind those brokers and those bankers. So essentially, they are the original sources. From their controls comes to the brokers, and then the control comes to us, the traders. So very good results have been given by this particular company in the quite some history, and I'm very convinced that this particular stock is good add to the portfolio. So next stock is Newgen Software. This is a regular IT services company, and based on the historical performances and the last quarter results as well, I am very much willing to add this add this stock in the portfolio. And next stock is PNG Jewelry. So this is PN Gadgil Jewelers. There is another company, PNG Gargi. So let's not get confused with that particular company. Gargi is a different company, very small company, mostly operating into cosmetic jewelries, etc. But this is a pure jewelry play. I mean the gold, diamond, etc. This is a very old company. It used to give very small kind of growth. I mean very linear growth, very moderate growth was given by this particular company for quite long time. But then suddenly from last 2 3 years the company has started picking up. I did some exploration around the company, और मैंने देखा कि company has suddenly turned around, and then it has started competing with the peers, and the growth rate and everything is like super fantastic, results are very good, and so on so forth. So yeah, on those basis, these three stocks are there that we will be moving in. So these changes we have not done yet. I mean, I just want to close this week with the older stocks, and then on the coming Monday, I shall be doing these transactions. I mean, I'll be moving these three stocks out of the portfolio and then moving these three stocks in. So this was pretty much about the updates of the portfolio. सो लास्ट वीडियो में हमने 100 सब्सक्राइबर्स का एक माइलस्टोन अचीव किया है. 100 सब्सक्राइबर्स माइट साउंड वेरी small, but it is of course better than 0 subscriber, and that journey we completed in kind of 6 7 weeks or something. So it was overall a good journey, and then gradually every week we are able to add 5 to 7 subscribers. So request you all to subscribe the channel if you like the content, and please give your thoughts, your suggestions through the comments, and tell us how we can do better, and whether this information is helping you or not, how we can do better from here. So please like and share the video as well. Thanks for your time, and meet you again in the next video. Thank you. Bye bye.